बचपन में अक्सर सोचा करती थी कैसे सोते चिड़िया बंदर पेड़ों पर। बचपन के इस खोए सवाल का पहुंच के जी भी मिला आज उत्तर, जब मैं जा ठहरी इन पेड़ों पर। और ये एक्सपीरियंस करने आपको भी आना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जीभी में, जहां आप रह पाएंगे पेड़ों पर इस यूनिक ट्री हाउस में। Hi guys, how are you doing? I'm your Joe and welcome back to my YouTube channel Travel with Joe. Right now I'm in GB and staying in this tree house. देख सकते हैं कैसे ट्री से बना हुआ है। ये पूरा जो वुडन हाउस है ये इस ट्री पे ही टिका हुआ है। It's really small place. There is a room and there is also one bedroom there and there is a balcony there. Yep. Yeah, it's a very small place and how they created, how they managed this really difficult to think. This is the cozy bed where we stayed and let's go outside from balcony. I'm going to show you the view. Here, this is very cozy couch and the view is really mesmerizing from this balcony. Tree house is an amazing experience to stay and the view from this balcony is very lovely. Really good kitchen along with this tree house and they have induction, they have पानी के लिए and also they arranged very good water bottle and tray and also they have 24/7 battery backup, inverter battery they have. If electricity जाएगी तो आप you can use this. Also they have heater facility, geyser for warm water. Also the view, we are going down from here. Here you can see geyser. This is mandatory. Sunlight is mandatory to have in the morning and this is our tree house. So at the end I'm going to show the tree. कैसे इस ट्री पे बिल्ड किया गया है. It's amazing concept. The owner of this property told me कि how they really did this such a amazing task. Really hats off to that person. They seriously amazing work. Let's go. They have started this Hidden Burrow tree house in 2018 और आज के दिन में ये सबसे हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी है. अगर आप कभी भी जीपी में आ रहे हो ना तो यू शुड बुक एटलीस्ट 1 week बिफोर, क्योंकि आपको यहाँ की बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल होगी. Seriously. So this is the property and if you are looking for this property I will give a link in description box. You can book from this link too and also they have on website so you can book it from there. So it's all about this property. I really fall in love with the tree house. This is my first experience in life in GB. So stay tuned for the next video. Lots of love. Yes guys, we have reached at Jalori Pass. हम लोगों ने ये बाइक रेंट आउट कर ली थी from GB and GB is 12 km away from this place and the view is really great, mesmerizing. And we are going for a track that is related to Raghupur Fort and yeah, there is a mandir you can see. It's a Jalori Jyot temple and we can't go ahead before taking the blessing of Lord. Let's go there for a while and then we will start for track.
So we are going to start for Raghupur Fort, and here's a landmark, Raghupur Fort and Cafe 360 degree. And it's a track for 3 kilometers. Will take 2 hours to reach there. Let's see कितना time लगता है. So we have arrived to the peak. I don't know Raghupur Fort अभी कितना दूर है, क्योंकि यहाँ से हम नहीं देख पा रहे हैं उसको. We can't see from here. And let's go. I think उस peak से शायद कुछ नज़र आए. So I'm going. Yeah, it's smooth walk. I think it's not a difficult track for now. क्योंकि difficult track we have already passed. It was like 1.5 hour track. So guys, finally we have arrived near to that fort. There is Raghupur Fort and there is a pond, and definitely it's worth coming here क्योंकि जो view है ना sunset का, it will be amazing. और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वहाँ जाके we'll sit for a while and we'll enjoy the majestic view of sunset. And you should come at the time of sunset or sunrise because the view is really stunning from here. And yeah, there are few people who are arranging camp. And also there's a pond. I think सर्दी हो रही है ना तो थोड़ा dry हो गया है. Let's walk to that fort. Yeah, I can see few people from here. Really worth coming here. Let's go. In the month of November, you can see little bit snow. There are many patches of snow. Yeah, if you want to see live snowfall, eyewitness snowfall, so you should come in December or January, I guess. Yeah, there's a little bit snow. सनसेट से पहले पहुंच गए यार. हाँ, it's great to be here and we have reached before sunset. The amazing news going to be happen. So guys, we are going for Jalori Pass, जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया था, और वहाँ से हम लोग जाएंगे जीबी के लिए. If you are staying here in camps, you should start by 4 PM so that you can see the sunset. And also, if you are going get back to the place GB, you should carry a torch, which we forgot to carry. तो हम लोग अभी मोबाइल टॉर्च से काम चला के जाएंगे. So yeah. Right now we are in GB and exploring a beautiful cafe. It based on special theme. Want to show you. So let's go. It's a special theme. You can see the cafe name is Into the Orbit, and we have ordered something very delicious South Indian food. Yeah, this place is famous for South Indian meal, and I have ordered one ghee dosa and what was that? Ghee podi idli. Yeah, with some good delicious sambar. Also this coconut and turmeric chutney. Yeah, the theme is very beautiful, and you can see the stars, the orbit, everything is very beautiful here. This is first place in GB जहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड एंजॉय करना हो तो मिलेगा, क्योंकि है ना ये जो थीम है ना वो तो है ही ऑर्बिट वाली, बट इसके साथ साथ है ना साउथ इंडियन क्यूजिन जीबी में स्पेशली इन कुल्लू एरिया मिलना बहुत डिफिकल्ट है. या दिस इज द फर्स्ट कैफे हु सर्व्स डिलीशियस साउथ इंडियन फूड. यू मस्ट ट्राई व्हेन यू आर इन जीबी. नमस्ते आंटी जी. नमस्ते अंकल जी.
बैठिए। मैं अभी आई हूँ श्रृंगी वाटिका, जो कि जीबी से करीबन 2 किलोमीटर दूर है, और स्पेशल यहाँ इनके मैं सिड्डू खाने के लिए आई हूँ। ये बहुत फेमस सिड्डू है, अगर आप कभी भी आए ना तो ये सिड्डू ज़रूर ट्राई करें। मैं इनकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छे अंकल आंटी है, इन्होंने स्पेशल मेरे लिए सिड्डू बनाया है। मैंने इनको कल कॉल की थी। तो yes. और क्या क्या बनाते हो आप सिड्डू के अलावा? फिश बनती है, मटन बनता है, रोगन जोश बनाते हो, हाँ, मोमोज मोमोज भी बनते हैं, ऑर्डर पहले करना पड़ता है। ऑर्डर पहले करना पड़ता है। और आपका यहाँ पे मान लो स्वीट राजमा बनाते हैं, डेजर्ट राजमा स्वीट, नई चीज़ है ये भी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं सिर्फ सिड्डू टेस्ट कर रही हूँ। और कुछ भी बनवाना हो ना, आप पहले से कॉल करके ऑर्डर करना, तो ये आपके लिए काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। आपको नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार नंबर बताना चाहोगे? बता दो। हाँ, 787-6470-930। ठीक है, ये नंबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अभी मैं सिड्डू को टेस्ट करने वाली हूँ। यम्मी।